Good morning to everyone. This is the sum we will do today in today's lecture. In front of your screen, Miss Bhagwati entered into the following transactions of purchase and sale of 12% debentures of rupees 100 each of Mansi Limited. So Miss Bhagwati is an individual who entered into the following transactions of purchase and sale of 12% debentures of rupees 100 each, and which is the company she is investing on. The debentures are of Mansi Limited. Now, one more important point: interest is payable on 30th June and 31st December every year. So 2 dates we cannot forget. One is 30 June and the other one is 31st December every year. So we'll have to keep in mind 30 June and 31st December, because these are 2 dates when interest will be paid by the company and we will receive interest. So the transactions are as under. On 1/4/2012, there is number of units, number of debentures is 800, and the opening balance at the cost of rupees 76,000. Now the value of one debenture is 100 rupees. Value of one debenture is 100 rupees and the number is 800. So we will get the nominal value. 800 into 100, that is 80,000 is the nominal value, and the cost is already given in the question, 76,000 for the opening balance. Then we will also have to calculate the outstanding interest on the opening balance. The outstanding interest, last interest, when is the last interest paid, and accordingly we will calculate the outstanding interest on the opening balance, because only 2 days the company pays interest, 30 June and 31st December. And if we are in 1st April 2012, then April में last interest कब pay किया होगा company ने? When we are at April and the due dates are 30 June and 31st December, then April में है तो इससे पहले last company ने कब interest pay किया होगा? Can anyone tell me? So accordingly, we will be calculating the outstanding months. Then 1st June ko, that is sales 105, come interest, and 30 June ko we'll have to pass the entry for interest. 1st September we have 700. 1st September we have 700 units purchased at 98x interest. So interest has to be separately calculated. And 1st December we will have to calculate again purchase 108 units each at come interest, 400 debentures. And 1/2/2013, 1st February 2013, again there is 900 units sold at rupees 97 x interest. Prepare investment account of 12% debentures in the books of Bhagwati for the year ended 31st March 2013. The market value on 31st March 2013 was rupees 67,500 of said investment. So they have given the market value on 31st March 2013. Cost value we will have. So we will have to calculate whether it is a profit or a loss and what will be the carrying amount that we will have to find out. Of the said investment, apply AS 13. AS 13 is
the accounting standard which is applied for investment accounting. So without wasting time, let us start. When is the first date given? First date given is 2012, 1st April. 2012, 1st April. Now why debit side? Because it's investment. Investment is a asset. Asset has a debit balance. So we have wrote in the debit side. 2 balance brought down. How many debenture? 800. And 1 debenture is of 100 each. So 800 into 100, 80,000. Interest we'll have to find out. Cost they have directly given 76,000 opening balance at the cost of rupees 76,000. 800 debenture. 1 debenture is of 100 each. So 800 into 100, we have got 80,000. Now what we'll have to do, let us put this information in the cost structure. Opening balance, units given 800 into 100 nominal value, cost is 76,000. Now what is remaining is the calculation of interest. Now I had asked one question to all of you. The company pays interest on 2 dates, 30 June and 31st December. We are at 1st April. तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया रहेगा कंपनी ने? Can anyone tell me? If I am at 1st April and the company pays interest in 2 dates, on 2 dates, 30 June and 31st December. So last April में रहते हुए last interest कब पे किया रहेगा? Yes, 31st December. अगर हम अप्रैल में हैं तो लास्ट इंटरेस्ट पे किया रहेगा 31st December को. तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट on opening balance. It was last interest was paid on 31st December. तो January, February, March, 3 months. 1st April है तो April को we will not count. Jan, Feb, March. These are the 3 months. And interest is always calculated on the nominal value. 12% into 3 divided by 12. How much is it coming? 3 divided by 12. It is coming 2,400. So we will write here 2,400. And the working note number is 2. Now next one, after the opening balance, now opening balance, see, nominal value is also complete, interest is also complete, cost is also complete. Now we can move ahead. 1st June 2012. So 2000, why in the credit side? It is a sales. Sales means what happens? Sales means investment कम होता है, investment asset है, asset है तो purchase में increase होता है, जब भी increase होगा तो debit, डिक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट. सो हम क्या करते हैं, हम डेबिट साइड में परचेसेस दिखाते हैं. इंटरेस्ट जब ड्यू डेट में आता है तो वो भी बिकॉज यहाँ पे बाई कैश बैंक अकाउंट में 2 मीन्स रिसीट, इंटरेस्ट इज रिसीव, तो इंटरेस्ट का एंट्री भी क्रेडिट में रहेगा. एंड सेल्स में बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड, कम होता है तो असेट है, कम होगा तो क्रेडिट करना है, तो सेल्स विल बी इन द क्रेडिट. सो विच इज द डेट? 1 June. 1 June, 1/6 is 1 June. So buy cash bank. Why cash bank? Because sales है, because it's the sales. How many unit? 300. 300 into 100, 30,000, and it's a come interest 105. So we'll go to the working note. Interest and cost is combined. So we will have to first separate it.
कम इंटरेस्ट सेल्स प्राइस 300 यूनिट्स है, 105 कम इंटरेस्ट है. So 300 into 105 means how much will be the amount? Multiply it. 300 units है and 105 rupees. So it is coming to 31,500. इसमें से लेस करना है interest, and interest is always calculated on nominal value. 300 units means it is 30,000. 1 unit ka face value is 100, and it is interest is always calculated on face value, nominal value. Total 30,000. 12% interest into how many month? हम 1 जून में है, तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून को या 31 दिसंबर को. हम कौन से मंथ में है? वी आर ऑन 1 जून. तो आई एम नॉट आस्किंग आगे कब मिलने वाला है, आई एम आस्किंग 1 जून में लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, कंपनी ने लास्ट बार इंटरेस्ट कब पे किया होगा. इफ वी आर ऑन 1 जून, तो अगर हम 1 जून में है तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया होगा? यस, वेरी गुड, 31 दिसंबर. सो हाउ मेनी मंथ? जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई. जून को तो काउंट नहीं कर सकते. 5/12 here we can show Jan to May, 5 months. So how much it is coming? 30,000 का 12% into 5 divided by 12, it is coming 1,500. So the sales price or the cost, we can say net proceeds is 30,000. So we can write here 1,500. The nominal value and cost is same, 30,000. So this is done, 30,000. Now sale होता है तो एक और चीज we need to find out. If it's a sale, then one more thing we need to find out. What is it? जब भी sale होता है तो one more thing we find out. 300 units we are selling. 30,000 is the nominal value. So इसका cost कितना है? We will have to find out to calculate the profit or loss. To calculate the profit or loss. तो profit or loss on sales. So वो निकालने के लिए how much is the sales price? We know sales price is 30,000. इसमें से लेस करेंगे cost, which is weighted average cost. It is we have to do a cross multiplication. 30,000 into 76,000 divided by 80,000. So we are doing a cross multiplication. 30,000 into cross में multiply. I hope all of you are familiar with cross multiplication. Divide by 80,000. So we will get the cost. So how much cost we are getting? Find out the cost. 30,000 into 76,000 divide by 80,000. We are getting 28,500. It is 28,500. The cost is 28,500. Now, whether it is a profit or a loss, cost है 28,000, but we have sold for 30,000, so it's a profit of 1,500. So profit है तो हम ये डेबिट साइड में दिखाते हैं. If it's a profit, we show on the debit side 1 June.
बिकॉज यहाँ पे दिखा के P&L अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट मतलब we show as P&L account, we give the effect to P&L account, and this is which working note? Fourth. Directly we will write in the last column 1500. So this is done. Now our cost structure को balance करते हैं. 800 में से 300 गया, 500, 30,000 गया from 80,000. Now 76,000 minus 28,500 gives us 47,500. So this is also done. So now what we will do? Now we will go to the next, because profit and loss is also done. Now we will go to the next one on 1/9/2012. Abhi next is a purchase on 1st September. 1/9 means 1st September. Now next entry is on 1st September, but 1st September से पहले क्या आता है? Now directly our next purchase is on 1st September, but 1st September से पहले ये 1st June को we have done the sales entry. Now directly the next purchase we have done on 1st September. But 1st September से पहले, if we do not forget, we have the due date. फर्स्ट, अभी 1 जून के बाद 30 जून आता है, एंड आई हैव टोल्ड यू यू कैन नॉट फॉरगेट द ड्यू डेट. अगर आप ड्यू डेट भूल जाओगे, and you cannot, if you're an investor, you can never forget the due date entry, because due date is the date when you will get the return on investment, you will get your interest on fixed investment. So here हमें भूलना नहीं है. नेक्स्ट एंट्री कौन सा है? 30 जून का. 30 जून को अगेन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. सो उसके लिए वी विल हैव टू गो टू द वर्किंग नोट. We will have to go to the working note. So 5th working note, let us go to the 5th working note. 5th working note, interest on due date. I hope you all are understanding. Interest on due date. It is which due date? 30th June. 30th June का due date है. How many units we have now? We had 80,000. 30,000 we sold. So now we are having 50,000 into 12%. And last interest दिया था 31 December को. ये 30 June है. तो it is how many month? January, February, March, April, May, June. तो 6 month में हम interest pay करता है company. So 6 divided by 12. Find out how much is the amount of interest. 50,000 into 12% into 6 upon 12. It is coming 3,000. It is coming 3,000. So we will go here and we will give the entry. Interest ka entry will come in the interest column. It is due date. Interest on due date, it will come in the interest column. So this is also done. Now we can go to our purchase entry, which is on 1st September. So 1 September ko what has happened? Purchase has happened. Purchase karte to debit side. Purchase karte to we will show in the debit side, because purchase means our investment will increase. How much it is? How much unit? 700 unit. To nominal value will be 70,000, and it is X interest.
इट इज 98x इंटरेस्ट. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 700 into 98 विल गेट द कॉस्ट. 700 into 98 x इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा. 98 we are getting 68 600. Now we have to go to the working note to calculate the interest because interest is not given. Interest निकालना है. So 6th one, it is interest on X interest purchase. So how many units? 700 ना. 700 means 70,000 में फाइन करना पड़ेगा. See, it is 700 means interest is always calculated on the nominal value and date is 1st September. So 12% into, now tell me हम 1st सितंबर में है तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ है? अगर हम सितंबर में हैं, कंपनी 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करती है, तो सितंबर में है तो लास्ट हम सितंबर में हैं, आगे नहीं, फ्यूचर में कब इंटरेस्ट पे करेगा से हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड. वी आर इंटरेस्टेड 1st सितंबर में है तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था? 1st सितंबर में है तो इससे पहले इंटरेस्ट कब पे किया था? इट वाज 30 जून. हमने एंट्री भी पास किया तो 30 जून के बाद जुलाई अगस्त 1st सितंबर है तो वी विल नॉट काउंट सितंबर. सो इट इज July and August, 2 months. So 2 divided by 12. Let us see how much interest is coming. Calculate the interest. 70,000 into 12% into 2 divided by 12. How much you are getting? You are getting 1400 as your interest. So here we will write 1400. Purchase is done because purchase में हम profit loss नहीं निकालते. Purchase either it will be that we have paid a higher price or we have paid a lower price as compared to others, but it is not, we will not calculate profit हुआ है कि loss हुआ है. Either we have paid a higher price or we have paid a lower price as compared to others. Either a higher price as compared to others or a lower price as compared to others, but we cannot find out profit or loss when we are doing purchase. Purchase तो हो गया, but one more important point, जब भी purchase sale कुछ भी करेंगे तो एक और जगह में add करेंगे ताकि we know at every point of time how much investment we are having. So here it is 68,600. So total कितना है? 1,200, 1,20,000 and 47,500 plus 68,600. We are getting 116,100. This is the total what we have investment securities with us. Now next date, let us see, which is the next date, 1st December. Again there is a purchase. So let us go, purchase means debit side. 1st December ko again there is a purchase. So to cash bank account. Now purchase hai 400 units. So 400 into 100. For, because one debenture is of 100 rupees, so number of debenture 400, but what is the face value, nominal value? 400 into 100, 40,000. Now it is 108 come interest, means interest be included hai or cost be included hai, 108. So let us go to the working note. Let us go to the working note, 7th one. It is come interest purchase price. Come interest purchase price. How much unit we have purchased? 400 into 105. Is it correct? Let me again check.
400 into 108. I am sorry, it is 108. So I will write here 108. So how much it is coming? मल्टीप्लाई करो 400 डिबेंचर्स, कॉस्ट है एक डिबेंचर का 108, इट इज कमिंग 43,200. इसमें से लेस करना है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट कैसे? नॉमिनल वैल्यू पे निकालना है एंड 12% है एंड दिस इज 1 दिसंबर. 1 दिसंबर. तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है कंपनी से? वी आर कंसर्न लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है कंपनी से? 30 जून को, करेक्ट? लास्ट इंटरेस्ट हमने ही पास किया ड्यू डेट का 30 जून. तो हम लोग 1 दिसंबर में है. तो हाउ मेनी मंथ्स? 30 जून को मिला था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. 1 दिसंबर है तो हम दिसंबर को काउंट नहीं कर सकते. इट इज जुलाई टू नवंबर, 5 months. So how much is it coming? Find out the interest amount. 5 divided by 12, it is 2000. It is 2000. So how much will be this? How much will be the cost? 41,200. So let us write it here. 2000 and 41,200. 41,200. So this is also done. Purchase करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना, whenever we are doing a purchase, we need not to calculate the profit or loss. Purchase में कभी भी profit और loss निकालने का जरूरत नहीं है, नहीं निकालते हैं. वो सिर्फ निकालते कभी है when there is a sales. So तभी सिर्फ हम लोग profit loss निकालते हैं. Now let us add this. This becomes 1,600. This becomes 1,60,000 and add 1,16,100 plus 41,200. This gives us 157,300. So this is also done. Now which is the next entry? Next हमारा entry है 1 Feb को. नेक्स्ट एंट्री है 1 Feb को, बट 1 Feb मीन्स नेक्स्ट ईयर. उससे पहले कोई और एंट्री आएगा क्या? या वी कैन डायरेक्टली गो टू द सेल्स? नो, करेक्ट. First, we cannot directly go to the sales of February month. Before that, we have interest, receipt of interest on 31st December. तो उसका एंट्री पास करते हैं. 31 दिसंबर को हमें अगेन इंटरेस्ट मिलने वाला है बाय कैश बैंक अकाउंट. interest on due date. Interest on due date. Now this ये वर्किंग नोट था 7 और ये वर्किंग नोट रहेगा 8th one. So let us go and do the 8th working note. Interest on due date. Interest on due date, and due date is which one? 31st December. So let us see हमें कितना यूनिट्स हमारे पास है. हमारे पास 1600 डिबेंचर्स है एंड इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे देते हैं. सो वी विल गेट द, हमारे पास जितना यूनिट्स होगा उतने यूनिट्स पे कंपनी हमें इंटरेस्ट देगी, पे करेगी. सो 1,60,000 into 12%, and जून के बाद जुलाई टू दिसंबर is 6 months. 6/12. So let us record the interest. How much it is coming?
1,60,000 into 12% into 6 divided by 12, it is coming 9,600. So we can write down, we can directly interest means it will come in the interest column, 9,600. 9,600. Now we can go to the next entry, which is in February, and it is sales. So here we'll change 2013 1 Feb. 2013 1 Feb. तो वो एंट्री क्यों क्रेडिट में लिखा? बिकॉज इट्स अ सेल. सेल मीन्स व्हाट हैपेंड? सेल मीन्स आवर इन्वेस्टमेंट विल बी reduced. So buy, and what हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कैश when we are selling our investment. So यहाँ पे sold 97x interest each. तो एक यूनिट को 97 में सेल किया, फिर 900 डिबेंचर मीन्स इट बिकम्स 90,000. एंड यहाँ पे वी कैन राइट एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अलग से निकालना है. 900 इंटू 97 हमें सेल्स प्राइस मिल जाएगा. 900 कॉस्ट, हमारा कॉस्ट कॉलम का अमाउंट मिल जाएगा. कितने में सेल किया? 97 rupees, which is 87,300. That is our amount that we will write in the cost column. Okay, so this is done. Now जो interest अलग से निकालना पड़ेगा, we'll have to calculate the interest separately. So 9 to 1 interest on X interest sales. How much is the units? Nominal value, हमेशा interest nominal value पे निकालते. And 1st February है ये, it is 1st February. लास्ट इंटरेस्ट मिला है 31st दिसंबर को. लास्ट इंटरेस्ट मिला है 31st दिसंबर को. तो हाउ मेनी मंथ का इंटरेस्ट? कैन एनीवन टेल मी? लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31st दिसंबर को, तो इट इज ओनली 1 month का इंटरेस्ट ऑफ जनवरी. इट इज ओनली 1 month इंटरेस्ट ऑफ जनवरी. So 1 divided by 12, only 1 month interest of January. So how much it is? It is 900. All are getting 900. 900. I hope all of you are getting 900. So we will write here 900. एंड एक और जगह पे लेट अस रिकॉर्ड. एंड सेल होगा तो और क्या निकालना पड़ेगा? whenever it is a sale, one more thing we will have to find out. What is it? Whenever it is a sale, we have to find out one more thing, that is whether it is a profit or a loss. Whether it is a profit or a loss on sales. Profit or loss on sales. So how much is the sales price? कितने में सेल किया है? What is the amount we got? कितने में सेल किया है? 87,300 हमने सेल किया है. 87,300 में we have sold for 87,300. इसमें से we will less what? Weighted average cost. उसके लिए we need to do a cross multiplication. 90,000 into 157,300 divide by 1,60,000. So here we'll have to do a cross multiplication. How much it is? 157,500 na?
157 300, I'm sorry, 157 300 into 90,000 divide by 60,000 है. Once again check 1,60,000 है क्या? हाँ, 90,000 and it is 1,60,000. Just do a cross multiplication. 157 300 into 90,000 divide by 1,60,000. We are getting 88,481.25. 0.25 है, so इसको 81 ही रखते हैं. Let us keep it 81 only. Correct? So tell me, is it a profit or a loss? हमने सेल किया 87,300 में, बट उसका कॉस्ट है 88,481, मीन्स इट्स अ लॉस. फाइंड आउट ऑफ हाउ मच अमाउंट. कितने अमाउंट का लॉस है? अमाउंट है 1181. द लॉस ऑफ 1181. So we got loss. This one. वो लॉस मतलब हमें क्रेडिट में ही दिखाना पड़ेगा. 1 Feb अगेन लॉस है, तो बाई P&L अकाउंट एंड ब्रैकेट में वी विल राइट लॉस. दिस इज वर्किंग नोट नंबर 10. वर्किंग नोट नंबर 10. लॉस है तो लास्ट कॉलम में वी विल शो 1181. 1181 is the loss. Now last जो transaction था, that is also done. Now let us write here. यहाँ पे हमने लिखा नहीं है ना how much it was. कितना मिला? 88,481. 88,481. 88,481. So how much it is coming here? 88,481. Now balance कितना आता है? 1 minute. So here let me remove this gap. Directly tab. So how much it is? Balance is 1,600 से 900 went. So how much will be left? How much unit will be left? 700, correct? Here it will be 70,000 and here 157,300 minus 88,481, it is 68,819. So now this is, now we can directly go to the year end. अभी डायरेक्टली ईयर एंड में जा सकते बिकॉज और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. अगर 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो ईयर एंड इज 31 मार्च 2013. ईयर एंड इज 31 मार्च 2013. So 31st March. Year end is 31st March. जब हम लोग क्या करेंगे? By balance carried down. तो यहाँ पे जो 67,500 दिया है ना, that is the market price, market value on 31st March. Market value on 31st March. तो वो देखते हैं एक बार. 11th working note, that is valuation of securities. तो यहाँ पे cost value from the cost structure we will get from the
cost structure. How much is the cost value? Cost value देखो, cost structure में 68,819. So we will write 68,819 and market value. This is given. This is given in the question. How much it is? 67,500. 67,500. This is given. 67,500. Now tell me, is it a profit or a loss? हमारी सिक्योरिटीज का मार्केट में वैल्यू है 67,500, बट हमारे बुक्स में वैल्यू है 68,819. In our books, the valuation is 68,819 and market value is 67,500. मार्केट में तुम्हारे सिक्योरिटीज का वैल्यू है 67,500, बट तुम्हारे बुक्स के हिसाब से उसका वैल्यू है 68,819. According to your books, the value is more, but market में आपका सिक्योरिटीज का वैल्यू is less. According to your books, the value is greater. 68,819 is high as compared to 67,500, means it's a loss on valuation. It's a loss on valuation. हमारा मार्केट में वैल्यू ज्यादा रहेगा सिक्योरिटीज का, then it's a profit. But if the value is lower in the market as compared to the books, बुक्स के कंपैरिजन में अगर हमारा मार्केट वैल्यू कम है, then it is a loss. Then it's a loss. Now how much amount loss it is? It's loss of rupees 1319. It's a loss of 1319. And हमेशा ध्यान में रखना, as we follow a conservative approach in accounts, प्रॉफिट अगर होगा तो जब तक वो एक्चुअली रियलाइज नहीं होता हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते. प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज. जब हाथ में आता है प्रॉफिट, जब प्रॉफिट रियलाइज होगा तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे. बट लॉस अगर दूर से भी दिखे तो उसे रिकॉर्ड करते हैं. मीन्स वी फॉलो अ कंजर्वेटिव अप्रोच इन अकाउंट्स. अकाउंट्स में हम कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं? कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं. तो लॉस अगर नहीं, हमने तो अभी तक बेचा नहीं है हमारे सिक्योरिटीज को, तो लॉस तो अभी से वैल्यूएशन में समझा है. बट स्टिल अगर लॉस हुआ है तो उसे रिकॉर्ड करो. इससे पहले दो सम हमने किया, दोनों सम में इट वाज प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन, बट हमने उसको तो रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज एज पर कंजर्वेटिव अप्रोच प्रॉफिट till not realized cannot be recorded. But loss अगर दूर से भी दिख रहा है लॉस होने वाला है, उसे फट से रिकॉर्ड करो. तो we will record it 1319. लॉस मतलब P&L अकाउंट के डेबिट में, और यहाँ पे बैलेंस से पहले लेट अस राइट, बैलेंस लिखने से पहले हम ये लॉस को लिखते हैं 31 मार्च. तो 31 मार्च को लिखेंगे बाय P&L अकाउंट. दिस इज व्हाट? दिस इज लॉस ऑन वैल्यूएशन. लॉस ऑन वैल्यूएशन. सो इस डन कितना लॉस है? 1319. तो ये डायरेक्टली ये लॉस को हम कौन से कॉलम में बताएंगे? ये लॉस को हम लास्ट कॉलम में बताएंगे 1319. एंड इसके बाद इसको टैली करना है. बट एक और हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं निकाला. सो दिस वाज व्हिच 11th वन? दिस वाज 11th वन. सो यहाँ पे वी विल राइट 11th. एंड वन मोर थिंग, वी विल राइट 12th वर्किंग नोट. That is accrued interest on
closing balance. Closing balance is on 31st March. लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया कंपनी ने? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? अगर हम 31st मार्च में है, इफ यू आर ऑन 31st मार्च, तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया होगा? जून या दिसंबर? 30 जून में लास्ट इंटरेस्ट पे किया होगा या 31st दिसंबर? व्हेन वी आर एट 31st मार्च, हम 31st मार्च में हैं, तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया? यस करेक्ट, 31 दिसंबर. सो 31 दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट है, तो 31st मार्च तक हाउ मेनी मंथ इट बिकम्स? कितना मंथ होता है? जैन 31st मार्च को दिया था ना, फेब एंड मार्च, बिकॉज 31st मार्च है. जैन, फेब, मार्च, 3 महीना हो जाता है. सो हाउ मेनी यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में? कितना यूनिट है? 70,000. सो इंटरेस्ट हमेशा 70,000 पे, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं. 12% into 3 divided by 12. Check how much we are getting. 70,000 into 12%. 70,000 into 12% into 3 divided by 12. We are getting 2,100. So we will write here, this is 12th working note. And ये हमें मिल गया इधर. कितना इंटरेस्ट है? 2,100. Now close this. ये बुक को क्लोज करो. ये बुक को क्लोज करो. See how much we are getting. 80,000 plus 70,000 plus 40,000. Close the nominal value column. हमेशा you will say the debit will be higher. 1,90,000. यहाँ पे भी 1,90,000. सेम वे कॉस्ट का भी निकालो. 76,000 plus 1,500 plus 68,600 plus 41,200. It is coming 187,300. Here also हमेशा डेबिट साइड ही हैवी रहेगा इन्वेस्टमेंट का. मतलब हमने जितना खरीदा है उससे कम ही बेचेंगे. दिस इज द लॉजिक. जितना हमारे पास रहेगा, जितना हमारे पास बैलेंस रहेगा, उससे कम ही हम सेल कर सकते हैं, या तो उतना सेल कर सकते हैं जितना हमारे पास है. हम उससे ज्यादा तो नहीं सेल कर सकते ना. सो ऑलवेज सी दैट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड विल बी हायर. इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज विच साइड विल बी हायर? डेबिट साइड. सो 190 में से 1,90,000 में से 90,000 and 30,000 माइनस करो, you will get 70,000. यहाँ पे 187,300 में से 30,000 माइनस करना है, फिर 87,300, फिर 1,181, फिर 1,319. That is 1,19,800 minus from 187,300. We will get 67,500 as equal to the market price. तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, whenever we are getting loss on valuation, सब हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर के अमाउंट के साथ टैली नहीं होता. तब हमारा जो मार्केट वैल्यू रहता है ना, जो whenever there is a loss on valuation, तब मार्केट वैल्यू में टैली होता है. तब किस में टैली होता है? हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट मार्केट वैल्यू में. सो कॉस्ट का कॉलम कितना आया? मार्केट वैल्यू जितना आया. नो वन मोर अकाउंट हैज टू बी क्लोज्ड. इंटरेस्ट अकाउंट का हमेशा क्रेडिट ज्यादा रहेगा. इंटरेस्ट अकाउंट का हमेशा क्रेडिट विल बी मोर. 1,500, 3,000, 9,600, 900, 2,100. This is 17,100. Here also 17,100 minus करो 2,000 minus 1,400 minus 2,400. We get the balance 11,300.
11,300. So 11,300. So यहाँ पे लिखेंगे डेट विच इज द डेट 2013 31 मार्च. सो उस डे में पीएनएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर, किधर ट्रांसफर होगा ये, बाई नहीं, टू पीएनएल account. This will be our balancing figure. With this sum is done. We got our balancing figure, which is the balance of interest, which I will be transferred to the P&L account credit side as income from investment, interest from investment. Thank you very much, everyone.